Hello students, now I am solving question number 3. The question number 3 is, at Srinagar temperature was minus 5 degrees centigrade on Monday and then it is dropped by 2 degrees centigrade on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees centigrade. What was the temperature on this day? So where temperature dropped, we write the given temperature in integer. It becomes minus 2 degrees centigrade, since here temperature is dropped. But on Wednesday it rose by 4 degrees centigrade. If we write this temperature in integer, it becomes plus 4 degrees centigrade. So now I am starting. At first we write temperature of Srinagar on Monday is equal to minus 5 degrees centigrade. Then temperature dropped on Tuesday is equal to minus 2 degrees centigrade. No, temperature dropped on Monday is equal to 2 degrees centigrade. So temperature of Srinagar on Tuesday is equal to minus 5 degrees centigrade minus 2 degrees centigrade. Since both have negative signs, that's why we add inside the bracket and put minus sign outside the bracket. 5 degrees centigrade plus 2 degrees centigrade, it becomes minus 7 degrees centigrade. So the temperature of Srinagar on Tuesday is minus 7 degrees centigrade. Now the next step is temperature rose by 4 degrees centigrade on Wednesday. Therefore temperature of Srinagar on Wednesday is equal to minus 7 degrees centigrade plus 4 degrees centigrade. Since both numbers have different sign, that's why we subtract inside the bracket and put the sign outside whose absolute value is greater. You will see that here the absolute value of minus 7 is greater than absolute value of 4. So we put minus sign outside and subtract inside. We will get minus 3 degree
centigrade. So temperature of Srinagar on Wednesday is -3 degree centigrade, and temperature of Srinagar on Tuesday is -7 degree centigrade. Now the next question is, a plane is flying at the height of 500 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? To understand this question, at first we draw a vertical number line, and suppose this is a sea level, and here a plane is flying above 500 meter above from the sea level, and the submarine floating below 1200 meter from the sea level. Let this is a submarine which is a 1200 meter below from the sea level. So the question is, what is the vertical distance between them? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी लेवल से 500 मीटर एबव एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, जस्ट सी लेवल से ही बिलो 1200 मीटर एक सबमरीन चल रही है, फ्लोट कर रही है, तो उन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, a plane is flying above sea level is equal to 500 meter, and a submarine is floating below sea level equal to 1200 meter. Now vertical distance between them is equal to 500 meter plus 1200 मीटर इज इक्वल टू 1700 मीटर। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे है कि यहाँ से इतनी दूरी 500 है और इतनी 1200 है, तो दोनों की वर्टिकल दूरी क्या है? तो हम इसको भी ऐड, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो दोनों का वर्टिकल हाइट आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. क्वेश्चन ये कहता है कि मोहन जो है बैंक में 2000 रुपीज़ उसके बैंक में है, और उस आउट ऑफ 2000 वो 1642 रुपीज़ विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ मतलब निकाल लेता है दूसरे दिन। तो आगे क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर, यदि विथड्रॉल को निगेटिव हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उसने उसके अकाउंट में जो पैसा है डिपॉजिट है वो उसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब विथड्रॉल को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिपॉजिट को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे।
देन क्वेश्चन इज फाइंड द बैलेंस। फिर आपको बैलेंस बताना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। सॉल्यूशन, मोहन डिपॉजिट इन बैंक इक्वल टू RS 2000। मोहन विथड्रॉल amount is equal to RS 1642। since withdrawal is represented by negative sign, therefore deposit deposited amount is represented by positive sign। Now I go to the next step, find the balance in Mohan's account। Balance in Mohan's account is equal to rupees 2000 minus rupees 1642 is equal to rupees 10 में 2 गया 8, 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3 एंड 1 में 1 गया 0। रुपीज़ 358 is remaining in his account। Now sixth question is, Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B। From B she moves 30 kilometer towards west along the same road। If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? क्वेश्चन ये कहता है कि एक पॉइंट से रीता जो है ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर जाती है, जो पॉइंट बी में पहुंचती है, और पॉइंट बी से फिर वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाती है 30 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन पहले स्टेप में ये पूछा है कि हम यदि राइट साइड की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव यदि लेते हैं तो जो वेस्ट साइड की डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे, किस साइन में लेंगे। तो आप जानते हो कि नंबर लाइन में राइट साइड की तरफ पॉजिटिव होगा तो वेस्ट साइड में आपका निगेटिव होगा। इसको समझने के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। एट फर्स्ट वी ड्रा a line and right here this is a west and this is a east। Suppose point A is here, Rita goes east direction 20 kilometer at B, so this is a 20 kilometer। Then second question is, step is, Rita
moves west direction from B about 30 kilometers. So suppose this is a 30 kilometers and Rita reached here. So now I am going to solve it. Rita goes 20 kilometer from A to east and C goes 30 kilometer to वेस्ट. आप देख रहे हो कि जब ये इस तरफ जाएगी तो इधर जब जाएगी तो ये माइनस हो गया है, कम होता जा रहा है. सो वी रिप्रेजेंट distance traveled by her to west direction in negative sign. So her final position equal to -20 minus 30. Since absolute value of 30 is greater than -30 is greater than absolute value of 20, so we put minus sign outside the bracket and subtract inside. You will get -10. So minus position will be -10 kilometer.